So hello everyone. Today I welcome you all into the next lecture of our chapter number system. So this lecture is second part for the third topic. Okay. So इस लेक्चर में हम समझेंगे बाइनरी नंबर से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करें या फिर वाइस वर्सा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. पहला हमारा है बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करें. अगर हमने पहले समझा था कि जब बाइनरी को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं सो हमारी जो बाइनरी की 3 बिट्स हैं वो ऑक्टल में एक सिंगल बिट में कन्वर्ट हो जाती है. सो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे. और हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स एक बिट में कन्वर्ट हो जाती है. इस कॉन्सेप्ट को अगर हम याद रखेंगे तो हमें ये टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा. जैसे कि पहला है बाइनरी नंबर को ऑक्टल में. ओके. सो हमें ये याद रखना है बाइनरी टू ऑक्टल 3 बिट्स into 1. सो हमारा ये बाइनरी नंबर दिया है. अब हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं के लिए इन नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड सॉरी थ्री थ्री उसके बिट से कॉन्सेप्ट में डिवाइड करेंगे. इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट. these 3 then this is 2, so we will add 0 1 1 times a 0 we will add. So we have 3 parts here. Then we will simply convert into octal number. Okay. So how can we convert into octal? We can directly convert 100 100. We will write 2 to the power. Let's not write 2 to the power. Let's write it like this: 100. So 100 positional value 0 1 2. So we will write 1 multiplied by, because this is binary, so 2 to the power 2 plus both are 0, so we don't have to write, which is 4. So you can see 4. Then for the next 101, positional numbers 0 1 2. So we will write 1 into 2 to the power 2, 2 to the power 2. Then middle one is 0, so we will skip it. So 2 to the power 0, because positional value is 0. So 2 to the power 2 is 4 and 2 to the power 0 is 1. So 4 plus 1 is 5. We can see 5 here. Then for the third part, 0 1 0. So first positional number 0 1 2. Okay. So rightmost and leftmost are 0, so we can skip it and work with the middle one. 1 into 2 to the power 1, which is 2. We can see 2. So this is how simply we can convert these triple bits value from decimal to octal. So we can convert this whole list of decimal numbers into a small octal numbers like this. And if we have to write octal to binary, we will just use any number which is an octal format by groupifying them into 3 parts, like this: 705. We will convert 5 into decimal. How we can convert 5 into decimal? We will write 5, then divide by 2. 5 divided by 2 is 2, and remainder is 1. 2 divided by 2, remainder is 0, and here is 1. So 2 divided by 1, remainder is 1, and the quotient is 0. When the quotient is 0, we will stop and we will use this remainder from bottom to up. So 101, then 0 will be all 0. And if always remember, if we are using octal to binary or binary to octal, we will group 3 bits of binary numbers into one. That's why we are writing 3 numbers here. Okay. Then 7, when it's converted, 2 divided by 7 is 3, remainder is 1. 2 divided by 3, remainder 1, and quotient 1. 2 divided by 1 1, and quotient is 0. Quotient is 0, we stop and we write this number from bottom to top. So 101. Then we can write all these numbers side by side, and we get a, a binary value from octal value like this. Okay. I know this conversion is a bit easier for those who are good with division and addition. So it's a good point for you to score numbers in your exam. Okay. So the next point is binary to hexadecimal. Okay. So if you remember this concept, now we can go from octal to hexadecimal. So 4 bits is converted into 1. Okay. Binary to 1. We are given this. We will divide this into 4 bits chunk. So first, always start from grouping your binary numbers from right to left. So we will group this here, group this here,
Now we are left with 0 1. So 0 1 is there, and two zeros are added on the left because we have only two bits here. Okay, then convert all these numbers into decimal value or hexadecimal. First convert to decimal, then hexadecimal. Okay, so in converting to decimal, uh, I will directly do it. So to the position value 2 and position value 3. Position value 3, 8 plus 2, 12. Okay, this one is 12. Then this one is 2. Wait, not 2. Here is 4. Okay, 2 plus 8. This one is 10 and this one is 1. Okay, so we will write 1. Then for 10, it is written A. For 12, it is written C. 1AC. You can see 1AC. Okay, so this is very simple. Now we convert hexadecimal to binary. Okay, so we are given 2, 3 and D. 2, 3 and D. 2 can be directly converted into binary 1 0. Then we have to always use 4 bits, so we will add two zeros here, and then 3, it is 1 1, then add 2 bits. D first converted into decimal, that is 13, then converted into binary format like this. So we got our binary number like this. This much easily we can do. uh, it might be a bit tough for the first time, but if you practice it 2 or 3 times, it is going to be the easiest thing you can do in your exam. Okay, so the next topic is conversion of a number with fractional part. अब हमें fractional part के साथ भी डील अप करना है. ओके, सो इसमें कुछ नहीं करना, हमें वही सेम चीज़ें, सेम जो मेथड है उसे रिपीट करते जाना है. बस इसमें इतना डिफरेंस है कि हमें अब डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन करनी है. जैसे कि सबसे पहला पार्ट है, हमें 0.25 जो कि बेस 10 में इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो वी कैन सी, हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हम डेसिमल को 2 से डिवाइड करते हैं, बट फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0.25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 50. Integer part here is 0, so we will write 0. Now 0.50, the fractional part 0.50 is multiplied by 2, we get integer part 1. Okay, सो इफ यू रिमेंबर, अगर हम मतलब फ्रैक्शनल नहीं होता, अगर सामने सामने ऐसी कुछ वैल्यू होती डेसिमल में, लेट्स चेंज इट फॉर अ बिट इजियर अंडरस्टैंडिंग, 129. ओके, ये होती, और अगर हम इसे डिवाइड कर रहे होते, ओके, सो समझ लो हमें रिमाइंडर कुछ ऐसा आ रहा था, 0 1 1 देन 0 1. सो हम बॉटम से टॉप तक जाते थे, बट इंटीजर में हम टॉप से बॉटम में जाते हैं. ओके, ये छोटी छोटी चीजों की याद रखना. सो हम जब टॉप से बॉटम में रहेंगे तो 0.25 को हम डेसिमल में लिखेंगे. पॉइंट फर्स्ट वी विल कैन सी 0 0, देन वी कैन सी 1, देन 1 2. ओके, this is the a clear difference between a fractional part and a non-fractional or real part. Okay, or integer part. So we can see another example, that is 675. So 675 when multiplied by 2 gives 1.35. So integer part we will write here and the decimal part we will write here. Let's change the, let's use the color difference. Okay, so integer part will be written here. Yeah, and the decimal part will be written here. We can see, so 0.35 multiplied by 2 is 0.700. So there is no integer part, so we will write 0, then 0.700 will be written here, multiplied by 2, 1.40. So 1 will be written here and 400 will be written here. 400 multiplied by 2, 800, so 0, then 800 multiplied by 2, sorry, 0.800. और after decimal we हम कैसे बोलते हैं after decimal? 0.800. We never groupify them. Okay, so 0.800 multiplied by 2 is 1.600. So 1 will be written in the integer part here and 0.600 will be written here. 0.600 multiplied by 2 is 1.200. So 1 will be written here and 200 will be written here. 0.2400. अब आप एक चीज देख सकते हैं कि इसके बाद इन्होंने जो कैलकुलेशन है वो स्टॉप कर दी, बट हमें एक एक एक्चुअल 0 0 की वैल्यू नहीं मिली इस टाइप से. क्यों करी? वो इसलिए करी कि आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 400 रिपीट हो रहा है.
मतलब ये कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लूप करती रहेगी अब। ओके, सो ये कभी खत्म नहीं होगी। फ्रैक्शनल पार्ट जो है इसकी रिपीटिंग वैल्यू है, इसलिए हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है स्टॉप हो गई। अब जितना हमें इंटीजर पार्ट मिला हम इसे लिख देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो 1 1 0 1 0 1 1 0। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट। अब ऑक्टल, जैसे कि अभी तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे इस फ्रैक्शन को, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ऑक्टल में हम मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, बाकी हमारा पूरा जो तरीका है वो सेम रहेगा, कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इस साइड आएगा और जो हमारा इंटीजर पार्ट है वो इस साइड आएगा, और हम इंटीजर को टॉप से बॉटम में लिखेंगे। और ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू सी समथिंग लाइक दिस कि 400 यहाँ पे, फिर कैलकुलेशन 400 फिर आ गया, सो ऑलवेज थिंक कि कैलकुलेशन रिपीट होने वाली है, स्टॉप, डोंट मूव अहेड। ओके, ये आपका टाइम खराब करेगा और आगे कहीं भी सॉल्व नहीं होएगा। जैसे कि इसको अगर हम सेम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करें, सो पॉइंट ए 16, 10 will be written here, 10 for hexadecimal will be written a, then 800 multiplied by 16, the 12 is represented as c in hexadecimal, then we can see 800 again, 800 again, so you can see repeating 800 will repeat, so on and on and on. So we will stop. 0.675 will be converted point ac for base 16. अब जो नॉन डेसिमल नंबर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हो उसे डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सो इसे हम देखते नहीं है, उसका मतलब हम वहां से देखेंगे नहीं कि क्या लिख रहे हैं वो, हम अपने आप करने की कोशिश करेंगे। 1 0 0 1 0 1.101। ओके, सो लेट्स राइट द पोजिशनल वैल्यू। अब ये जो डेसिमल है, डेसिमल से जो लेफ्ट साइड है ये हमारा इंटीजर पार्ट है, इसकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी पोजिशनल वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब इसके लेफ्ट साइड -1 -2 -3। ओके, let's the positional numbers are written as a number, number on scales. Okay, so we can write it like this: 2 to the power 5, 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 to the power 2, then 2 to the power 1, and 2 to the power 0, 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3. So we can convert it like this: 1 multiplied by 2 to the power 5, then double 0. So we can skip 1 into 2 to the power 2, then 0. We can skip 2 to the power, 1 to the power 2 to the power 0. Then after comes the decimal part. Okay, so 1 into 2 to the power -1. Then 0 we can skip, then 1 into 2 to the power -3. So 2 to the power 3, 32, plus 2 to the power 2, 4, then 2 to the power 0, 1. Then this comes like this, and 2 to the power -3. So 0.5, 0.25, 0.125, 0.125. It will be like this. So we get our last number like 32 plus 4, 36, 37.625. Am I right? Yes, we are right. Okay. This is how simply you can convert. Now we can this was of base 2. We can similarly do for base 8 by, instead of using 2 to the power positional value into 8 to the power positional value, and it is all similar. Okay, so now we can see fractional binary number to octal or hexadecimal, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सो समथिंग हमारे दिमाग में ऐसे क्लिक होना चाहिए कि बाइनरी टू ऑक्टल करना है, अच्छा 3 बिट्स को एक साथ करना है, वो करना है ग्रुपीफायर, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट्स को एक साथ। सो हम 3 बिट्स को एक साथ करेंगे, 3 3, देन यहाँ पे 2 हैं तो एक ऐड कर दिया, 3 3, यहाँ पे 2 है तो एक ऐड कर दिया। अब इसको वैल्यूज में कन्वर्ट किया, ऑक्टल ऑक्टल की वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। सो वी कैन सी लाइक दिस द वैल्यू, इट इज ऑल, मतलब इसमें हर एक चीज जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप कुछ नया नहीं पढ़ना, आप बस 2 से 3 चीजें पढ़नी है कि बेस क्या होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करना। आप हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप कि आपने ये सब कुछ समझ लिया, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टू स्कोर सम अमेजिंग नंबर्स फ्रॉम दिस टॉपिक।
So thank you. See you. Tata. Bye bye.